Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In this video, I added 5 proven memory boosting techniques that will surely help you people to enhance your memory. As we know that memory enhancement is mandatory in today's fast-paced world, where we are constantly bombarded with multiple information. Either you are a student who is looking to perform well in your exam, or you are a professional who is seeking to improve and to enhance his or her productivity. Having a good memory can change the game. Our brain is like a sponge that can absorb and process data at an incredible rate. But because of multiple factors, just like bundles of information coming from the external world, or because of age factor or any other, sometimes we are unable to recall some information, and sometimes we are even unable to form or store information. So in this video, I will share these proven techniques that can help to overcome memory related challenges and to improve our ability to learn and to retain new information. But before moving to these 5 important techniques, here are some journal tips that you people can use to make your memory better. The key to improving your memory is to improve the encoding process. As I have already told you in the previous video that if your encoding process is better, you can enhance your storage capacity and your recall when information is required. You can improve your recall process. Now, by using some journal tips, you can improve your encoding process. Good encoding techniques can be to relate new information with the already available, what you already know, with the information that is already stored in your mind. The second one can be to form the mental images and to create association among the information that needs to be remembered. Now, good retrieval also depends on developing effective cues that will lead a person easily back to the encoded information. Additionally, there are mnemonic techniques that are well known from the time of ancient Greeks and that are still used today. These can significantly improve the person's memory. These are some journal tips that can enhance our memory. Now, let's start with the first technique. The first technique to improve our memory is maintenance rehearsal. It is to practice, practice, and practice. Rehearsal is repetition of any information. Now, what is maintenance rehearsal? Maintenance rehearsal can be verbal repetition silently or loudly. Verbal repetition of any information again and again so that it can be stored, it can be stored for a long time period in your short-term memory. Maintenance rehearsal is repetition of information and store it in short-term memory. It is to improve the time duration of short-term memory, information that is stored in short-term memory. As to repeat a phone number till dialing it. As when we repeat a phone number, the cell number of any person, and then we until we find our own cell phone and dial it. It is for the immediate or temporary recall of information. Maintenance rehearsal is used for immediate or temporary recall of information. It is verbal repetition of any information, which is also known as rote rehearsal. Maintenance rehearsal is used to increase the storage time of information that is stored in short-term memory. This rehearsal can be verbal, where language is used to repeat the information. It can be mental, where a person is thinking about or repeating information in mind. So it means that maintenance rehearsal is repetition of any information and it can be used to enhance the storage of short-term memory. Maintenance rehearsal में
हम इंफॉर्मेशन को या वर्बली रिपीट करते हैं या मेंटली बाय थिंकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट दैट इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन रिकॉल इट ईजिली एट सम लेटर टाइम. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टे करती है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारे माइंड में स्टोर होती है. अगर आप लोग अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम ड्यूरेशन एनहेंस करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप मेंटेनेंस रिहर्सल यूज़ करें. मेंटेनेंस रिहर्सल में आप या तो उस पर थिंकिंग स्टार्ट कर दें रिपीटेडली या उसको वर्बली रिपीट करना स्टार्ट कर दें ताकि वो ज़्यादा टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइम ड्यूरेशन को एनहेंस कर सके, ज़्यादा टाइम तक स्टे कर सके. ये उन चीज़ों के लिए होती हैं जो इमीडिएट हमारा टास्क होता है, जिसको हमने इमीडिएटली परफॉर्म करना होता है, और जो टास्क हमने विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड एक परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम मेंटेनेंस रिहर्सल यूज़ करके उस टास्क को ईजी बना सकते हैं, उसको हम क्विक कर सकते हैं, उसके रिकॉल को ईजी बना सकते हैं. रेपिटेशन ऑफ फ़ोन नंबर हो गया, बुक रीडिंग हो गई. आप वर्बली या मेंटली आप उसको रिहर्सल दे रहे हो, रेपिटेशन दे रहे हो, और आप उसको फ़ौरन से जब आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसको रिकॉल कर सकते हो ईजीली. Now the second technique is elaborative rehearsal. Now what is elaborative rehearsal and how it is different from the maintenance rehearsal? Elaborative rehearsal is to give meaning. Rehearsal by meaning. Rehearsal by meaning or rehearsal by understanding. It is repetition by understanding. जब आप किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को एक टाइम पे लर्न करते हो, फर्स्ट टाइम आप उसकी लर्निंग कर रहे होते हो, एंड देन यू थिंक अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन. आप उसको ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हो, आप उसको मीनिंग फाइंड आउट करते हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो. दैट इज एलैबोरेटिव रिहर्सल. It is method of memorizing information more effectively and to store it in long-term memory. Maintenance rehearsal is a memory improvement technique of short-term memory. Elaborative rehearsal is used to improve our long-term memory. It is based on understanding and meaning. It is a technique that is based on association between a newly learned material with already stored information in mind. एसोसिएशन बना रहे थे हम, एक न्यू चीज़ जो जिसकी हम लर्निंग कर रहे होते हैं, हम उसमें इतनी थिंकिंग करते हैं, हम उसको इतना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन. अ पर्सन कैन यूज डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स टू मेक द एसोसिएशन बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन. अब these techniques include to create an image in mind, to organize information, to think about the examples related to that information, and to use any mnemonic technique. Now, what is this mnemonic technique? I will explain all mnemonic techniques in my next video. For current video, keep in mind that an elaborative rehearsal is the memory enhancement technique for long-term memory, and it is based on our अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट मटीरियल. जब भी आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करने जा रहे हो, हमेशा एसोसिएशन बनाएं, लिंक बनाएं उस इन्फॉर्मेशन का ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोराइज्ड मटेरियल के साथ. आपके माइंड में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ एसोसिएशन बनाएं. आप उसके मीनिंग पे फोकस करो, उसका एक मेंटल इमेज बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में लेके जा सकते हो, आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स सर्च कर सकते हो. आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए उस पर डिफरेंट एग्जाम्पल, थिंक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑन दैट इंफॉर्मेशन. तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहेगा, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, एंड यू कैन रिकॉल दैट इन्फॉर्मेशन ईजिली इवन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. The third technique is known as spaced repetition. What is this spaced repetition? Spaced repetition is a method of reviewing information at systematic intervals. We use systematic intervals, proper intervals for the reviewing of this information. It is a way of learning through active recall. Active recall is different from the passive recall. Spaced refer to the gap of time between study sessions. Here we give gap, we repeat the information but with gap.
A person may review the information right after school and then actively recall the information in a few hours later, then a few days, then a few weeks later. After some specific systematic interval, you repeat that information again and again. Practicing active recall at later and later interval is important because individual can strengthen his or her memory while fighting against his or her brain's forgetting curve. एक्टिव रिकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में स्टोर रखवाने के लिए, स्टोर करने के लिए. अब स्पेस्ड रेपिटेशन में सिस्टमेटिक इंटरवल हम रख लेते हैं. आफ्टर सिस्टमेटिक इंटरवल वी रिपीट दिस इंफॉर्मेशन. हम मेंटली उसको रिपीट करते हैं. अच्छा, डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर करूँगी. डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन के लिए. स्पेस्ड रेपिटेशन इज रेपिटेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑन systematic intervals. Some people fixate the ideal time intervals to use. The intervals will depend on how much new information a person has, how difficult the information is, and how much time individual has until an exam. Now the key in spaced repetition is just to retest yourself with active recall multiple times, spaced some time apart. Again, the same thing, that repetition, it is a retest of individual. You are taking your own test to recall this information after a systematic interval. Some people have ideal time intervals, but it is not mandatory. Different strategies can be used for spaced repetition or active recall. अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो स्पेस्ड रेपिटेशन के तौर पे. द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज आफ्टर रिमेम्बरिंग समथिंग टेक अ मिनट and write down what you have learned. I hope it is clear to you people, that when you are learning something, when you are memorizing something, you are learning about new material, when you think that it is over, this material is clear to you, after remembering that thing, write down what you have learned. जो आप ऑलरेडी स्टोर कर चुके हो, एक नई इन्फॉर्मेशन आपने अपने माइंड में स्टोर कर ली, तो कुछ टाइम ले लें उसमें उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड से रिकॉल करवाएं, उसको लिख दें. अगर आप रिकॉल करवा लेते हो देन इट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन योर माइंड. राइट डाउन इज द single technique, is one technique that you can use for spaced repetition. The second technique can be take a mental quiz. Think in mind what you have learned. फर्स्ट टेक्निक में क्या था, आपने लिखना है, आपने एक मटेरियल मेमोराइज किया, उसके बाद आपने उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेके उस ब्रेक में आपने उसको राइट डाउन करना है. सेकेंड टेक्निक क्या है, इफ यू डोंट वांट टू राइट डाउन यू कैन थिंक मेंटली. आप अपने माइंड में उसको एक अपना मेंटल क्विज ले लें. उसमें फिजिकल आपका रिटन नहीं है लेकिन आपका मेंटल क्विज चल जाएगा एंड यू विल थिंक ऑन इट व्हाट यू हैव लर्न. मेंटल रेपिटेशन आप कर सकते हो. द थर्ड टेक्निक इज मेक सेल्फ क्विज. उसी इंफॉर्मेशन में से, उसी मटेरियल में से आप अपने लिए एक क्विज बना लें, कुछ क्वेश्चंस डिसाइड कर लें और उन क्वेश्चंस को आंसर आउट करें. सेल्फ क्विज आपका सेल्फ मेड क्विज होगा. यू कैन मेक योर सेल्फ quiz and you can answer out that information from the material that you are stored in your memory. The next technique can be make flash cards. Flash cards सब फेमिलियर है फ्लैश कार्ड्स में, जिसमें आप एक साइड पे डबल साइडेड होते हैं, जिसमें आप एक साइड पे क्वेश्चन लिखते हो और नेक्स्ट साइड पे आप उसका आंसर लिख लेते हो. सो इट मीन्स दैट यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चंस. You can make the flashcards on one side of the card and on the second side you can write down the answers of those questions. Make flashcards from the same information, same material that you have already stored in your mind. Make flashcards and take your quiz. These are different techniques that you can use to
enhance your memory by using the spaced repetition technique. The next technique is avoid cramming. Cramming, what is cramming? Cramming is overflow of information. It is to study with extreme concentration over a short period of time just before an examination. जिस तरह आप लोग करते हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं, बिफोर एग्जामिनेशन हम फ़ौरन से बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, बहुत सा कोर्स कंटेंट होता है और उसको हमने शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में उसको अपने माइंड में स्टोर करना होता है. तो जब हमने शॉर्ट टाइम में एक लॉन्ग मटेरियल, लार्ज मटेरियल अपने माइंड में स्टोर करना है, सो इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू क्रैमिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसको हमने अपने माइंड में स्टोर करना होता है. टू एब्जॉर्ब द ह्यूज इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम इज नोन एज क्रैमिंग. It leads towards forgetting. That's why we say that I don't know what is the issue but I forget the material. Preparation बहुत अच्छी की थी, एग्ज़ाम के दौरान लिख नहीं पा रहा. This is cramming. प्रिपरेशन जो आपने बहुत अच्छी की वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपने बहुत ह्यूज मटेरियल अपने माइंड में स्टोर कर दिया. एंड दिस क्रैमिंग लीड्स टूवर्ड्स फॉरगेटिंग. इट इंक्रीजेज द स्ट्रेस लेवल एंड इट लीड्स टूवर्ड्स एग्जाम एंजाइटी. So what is the drawback of this cramming? Cramming leads towards exam anxiety and it can increase the stress level of the individual or students. So it means that we have to avoid this cramming and we have to study material with proper time, study information by giving that information the proper time. The next technique is known as chunking. Chunking, chunks, these are chunks. Chunks are small parts of the information, small groups of the information. Chunking is the process of grouping information in manageable chunks. Chunking increases the storage capacity of short-term memory. According to research, people can store 5 to 9 items at a time in their short-term memory. What is the storage capacity? According to our research, we can store 5 to 9 items at a time in our short-term memory and then forgetting occurs. By using chunking, this capacity can be enhanced. For example, we can enhance the storage capacity of short-term memory. If you want to increase the storage capacity, you want to store more than 9 items into your short-term memory, then you can use chunking to divide information into small meaningful chunks and then store those chunks into your mind, and it will enhance the storage capacity of your short-term memory. We use chunking to memorize the bank account numbers or phone numbers. Sometimes we use this chunking technique to memorize our bank account. We divide our bank account number into small meaningful chunks. We divide the cell phone number of any person or our own phone number into small chunks, and then we store that information easily, more than 9 items at a time in our short-term memory. Similarly, shopping list can be easily memorized by dividing it in chunks. For example, one chunk of vegetable, chunk of fruits, chunk of dairy products and others. So it means that when we want to memorize the shopping list, we can divide it into meaningful chunks, and it will be easy for us to memorize the material from our shopping list. This is the example. When we go for the shopping, we memorize, we divide the information, we divide the grocery items into small chunks, and then we memorize a large number of material at a time in our short-term memory. This is chunking example. For example, look at these digits that are in a line. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digits. You can store 9 digits at a time in your short-term memory, but 5 to 9 items. Some people can store only just 5 items and maximum is 9. But when we divide this information, it will be difficult for us. When we divide this information into meaningful chunks, for example, this one is the first chunk, this one is the second chunk, and this one is the third group or third chunk.
So according to our short-term memory, there are only 3 chunks that we are storing. So it means that the digit is just 3. We can store this information easily in our short-term memory, and we can recall it easily. Just like the other example, look at this example. This row includes more than 9 digits, so it is very difficult for us to recall this information after single presentation. But when we divide these digits into meaningful chunks, it will be easy for us to recall these chunks. For example, let's divide the information into meaningful chunks. First chunk 1991, second chunk 1878, third chunk 1773, fourth chunk 2002. So it means that we can easily recall when we divide the information into meaningful chunks. So whenever you want to enhance your memory capacity, you want to improve your memory, similarly you can enhance your vocabulary by grouping together the meaningful material or related material in a specific chunk. You can also memorize different formulas. You can also memorize different items, different material, different information by grouping together the related things. So by dividing the information in meaningful chunks, we can improve our